Welcome to the journey of motherhood. UPT positive. What is next? You visit to a gynecologist. अब आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे जो कि कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए है, बच्चे का क्या हार्मोनल स्टेटस है और कुछ और भी चीजें जैसे कि बीटा एचसीजी, वो आपका प्रेगनेंसी कंफर्म करेगा। सीरम प्रोजेस्टेरोन से हमें मालूम पड़ेगा कि बच्चे को कोई सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है। थायराइड, इट्स अ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग बिकॉज हमें थायराइड लेवल लेस देन 3 पे मेंटेन करना पड़ता है। और आपका बेसिक शुगर लेवल जो कि जीसीटी डिप्सी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इस आपने कोई भी खाना खाया या नहीं खाना खाया, इट डजेंट मैटर, 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटे के बाद टेस्ट करके देखेंगे। अगर ये 140 से ज़्यादा है तो आप शुगर के शिकार हो सकते। तो ये बेसिक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं और इनसे हमें आपकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। Your baby is growing. Now your second visit is due to the doctor. The time has come for a first ultrasound scan when we can locate बच्चा कहाँ पर है, कैसा बढ़ रहा है, उसकी हार्ट बीट आई कि नहीं आई। Around 6 to 7 weeks we will do your first scan. अगर स्कैन में सब कुछ हमें नॉर्मल मिलता है, हार्ट बीट अच्छी है, बच्चा यूट्रस के अंदर है, तो हम आपको आगे के टेस्ट बताएंगे जिसमें कि हम आपकी बॉडी को पूरा इवेलुएट करते हैं, आपका हीमोग्लोबिन देखते हैं जिसको हम सीबीसी कहते हैं, फिर हम आपका यूरिन देखते हैं। और प्रेगनेंसी सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ यूरिन कल्चर कराना बिना किसी सिम्टम के भी दवाई देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तीसरा टेस्ट हम आपका ब्लड ग्रुप देखेंगे, आपका हम थैलेसीमिया स्क्रीन करेंगे जिसको एसबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, आपका रुबेला इम्यूनिटी स्टेटस देखेंगे। अगर ये सब टेस्ट आपके प्री कंसेप्शनल केयर में हो चुके हैं तो ये 3 टेस्ट ब्लड ग्रुप, रुबेला आईजीजी एंड हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस लाइफ लॉन्ग होता है, दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में कुछ होने पे बड़ा मुश्किल होता है समझना। लेडीज़ की उम्र बढ़ रही है, आप 35-38 में आते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो एक आपका बेसिक टेस्ट किडनी के लिए जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन, लीवर के लिए एसजीओटी एसजीपीटी एंड आपका ओवुलेशन स्टेटस देखने के लिए पीटीए पीटीटी, ये ऑप्शनल है, ये भी टेस्ट हम कई बार देखते हैं। साथ में वायरल मार्कर एसबीएसजेजी, हेपेटाइटिस बी जिसको कहते हैं, एससीवी, वीडीआरएल, एचआईवी, ये दोनों पार्टनर का होता है बिकॉज यू कैन एक्ट एज ए कैरियर। देयर इज अ टेस्ट विच इज अंडर बिग कंट्रोवर्सी जिसको हम टॉर्च टेस्ट कहते हैं। ये कभी भी रिकरेंट एबॉर्शन के लिए नहीं होता है, बट इन एनी प्रेगनेंसी यू कैन बी अ कैरियर ऑफ दिस इन्फेक्शन। सो टॉर्च आईजीएम जिसमें हम टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, हर्पीस और इनको हम टेस्ट करा करके सीएमवी, इनका हम आईजीएम, ओनली आईजीएम देख लेते हैं। अगर किसी का आईजीएम पॉजिटिव होता है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ढंग से हम एक बार आपकी पूरी बॉडी का इवेलुएट करते हैं और प्रेगनेंसी को आगे की तरफ बढ़ने देते हैं। अंदर बेबी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब वो एम्ब्रियो से फीटस की तरफ जा रहा है, उसकी लिम्ब बड्स निकल रही हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी नेजल बोन बन रही है, उसकी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो अब ये समय आ गया है जब हमें से अर्ली कंजेनाइटल स्कैन जो कि 12 वीक्स से लेकर 13 वीक्स के बीच में किया जाता है, यूजुअली हम 12 वीक्स पे इस टेस्ट को करते हैं। कुछ लोग इसको एनटी स्कैन भी कहते हैं। ये आपके बच्चे के अंदर अर्ली डेवलप होती हुई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स या स्ट्रक्चर डिफरेंट या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट कर सकता है। साथ में एक टेस्ट होता है जिसको डबल मार्कर कहते हैं, जिसमें बच्चा कुछ आपकी बॉडी में सिक्रीशन करता है, उसको टेस्ट करके हम प्लॉट करके निकाल सकते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या लो रिस्क प्रेगनेंसी है। अभी एक नया टेस्ट और आ गया है जिसको हम पीआईएच स्क्रीनिंग कहते हैं, जो डबल मार्कर के साथ ही कराते हैं। उससे हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या हमें कोई डाउट आता है तो एक और भी टेस्ट है जो सेल्फ की डीएनए में, यानी बच्चे का जो सेल है आपके माता के ब्लड से निकाल करके, जिसको एनआईपीटी कहते हैं, उसको भी हम करा सकते हैं, जिसमें हमें बच्चे के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये टेस्ट आने के बाद हमें मोटा मोटा ये मालूम पड़ जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क कैटेगरी में है या आपको और भी आगे ये टेस्ट कराने की आवश्यकता है। आपका प्रेगनेंसी का डिसीजन हो चुका है कि आपका डबल मार्कर नॉर्मल है, आपका अर्ली कंजेनाइटल स्कैन नॉर्मल है,
तो प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हुए हम आपको 16 हफ्ते के करीब एक चेंज आता है और उस समय हम फिर आपके कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे कि हमें देखना होता है कि आपका हेमोग्लोबिन अभी ठीक चल रहा है, क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी होती है। फिर हम उसमें जो है आपका यूरिन भी फिर से चेक करा लेते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है। साथ साथ एक क्वाड मार्कर करके टेस्ट होता है, जो कि करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। सिक्वेंशियल डबल मार्कर और क्वाड मार्कर करा लेते हैं। अगर NIPT हो चुका है तो क्वाड मार्कर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ये भी हमें थोड़ा सा और हेल्प करता है बच्चे के बारे में जानने के लिए। थायराइड को कभी कभी अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है तो TSH का भी हम टेस्ट एक बार करा देते हैं। थायराइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि बच्चे की न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हेल्प करता है, और हमारी पॉपुलेशन में हाइपोथायराइड एक बहुत ही कॉमन समस्या है। और ख़ास करके अगर आपका थायराइड मेडिसिन चल रही है तो 3 to 4 वीक्स पे एक बार TSH कराना बहुत आवश्यक होता है। इस समय हम आपको इंजेक्शन TT भी देते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट वैक्सीनेशन है। अब आप अपने 16 वीक्स के सारे टेस्ट का रिजल्ट लेके आप हमारे पास जब आते हैं तो आपका 5वां महीना शुरू हो चुका होता है। तो हम उन टेस्ट को इवेलुएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की टेस्ट के बारे में हम बताते हैं। पहले जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हमें अबॉर्शन की अनुमति सिर्फ 20 वीक्स तक की थी, तो हम नॉर्मली 20 वीक्स के पहले लेट कंजेनाइटल स्कैन कराते थे। लेकिन अभी हमने जब से अनुमति 24 वीक्स तक की हो गई है तो उसको कुछ बढ़ा दिया है। नाउ वी डू दिस लेट कंजेनाइटल स्कैन around 22 weeks along with the cardiac echocardiography of the baby, यानी कि हम बेबी का हार्ट भी पूरा डिटेल्स में उस समय चेक कर सकते हैं। तो दोनों ही टेस्ट 22 वीक्स के करीब लेट कंजेनाइटल स्कैन एंड फीटल कार्डियक इको करा लिया जाता है। और साथ में ये समय है एक बार फिर से आपकी शुगर देखने का, क्योंकि PCOD के कंडीशन में अदरवाइज बाय एथनिसिटी वी आर इंडियंस आर प्रोन टू गेट द डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी इज अ डायबिटोजेनिक कंडीशन। आपका शुगर इवेलुएट होता है। साथ में हम इस समय आपको एक फ्लू का वैक्सीनेशन भी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। आपको लग रहा है ये लेट कंजेनाइटल स्कैन क्या है? जनरल पब्लिक को समझाने के लिए हम इसको लेवल 2 कहते हैं, जैसे अर्ली कंजेनाइटल को हम लेवल 1 कहते हैं, कि धीरे धीरे हमारा समझने की ताकत अल्ट्रासाउंड पे बढ़ती चली जाती है। Wow, baby is developing. Moving inside the abdomen, you can feel the fetal movement. It's very important to understand how the baby is moving in the abdomen. Your abdomen is growing. Now you can feel it below umbilicus, and gradually it will increase above umbilicus. Do you need any test? Yes, it is very important to have your detailed glucose estimation as a OGTT3, that is oral glucose tolerance test. What this test is, with a 10 to 12 hours fasting in the morning, when you get up from the bed, your fasting blood sugar sample is taken. Then you will have a glucose 75 gram anhydrous glucose. Mix in 300 ml water. You can put little bit lemon, so it will be palatable. Take in 5 minutes to 8 minutes, so you won't vomit it. But just don't move, don't do anything, because if you expend the energy, your report will be wrong. Another sample is taken at 1 hour, then the third sample is taken after the another 1 hour, that is 2 hours after ingesting the glucose. So these test is very very important, specifically in our Indian scenario. We want that fasting blood sugar is less than 95. In normal population, 1 hour sample is less than 180, but if it is increasing more toward 180, it is a line when we think about it, maybe we have some restrictions, and after 2 hours it should be around less than 153. But once you are diagnosed that you are diabetes mellitus or GDM, then our ratio is changed. It is 95, 140 after 1 hour and 120 after 2 hours. This test really saves you from many problems in your complications and in the fetal developments and fetal complications. When your 7 months start, 7 months does not mean that it is starting at 24 weeks. No, it is starting at 26 weeks. From 26 to 30 weeks,
There's a lots of development in the baby. Bones become strong. Weight gain is very much in the baby. And it is a time when we can save the baby after 28 weeks. Before 28 weeks also we can save, but there are lots of neurological problems. So you have to be very, very vigilant. At this time, between 28 to 30 weeks, we go for another battery of tests. One is a level 3 or Doppler ultrasound, in which we see the baby general growth and blood vessel pattern, whether it is moving inside the blood normal or some resistance is increasing inside the baby. So enough blood is not reaching to the baby. That is very necessary to understand, because we have enough time to correct it. Then estimation of HB hemoglobin, urine with a culture, and again around 30 to 32 weeks your sugar will be tested again. Because if you develop a sugar and you didn't know it, it can cause lots of neurocognitive behavioral problem in the baby. In Western country, they don't require so much of the sugar because they are not ethnicity a diabetic people, but we require our diet also have less protein and more of the carbohydrate. And this is the time of another third vaccination. This is called injection Tdap. Here, not only you get that vaccine, you pass that passive immunity to your baby. And it is really advisable to give all the other family members who have a very close bond with the baby. They are having baby with them all the time, even your Japan nanny also. So 7 months, the color Doppler or level 3 ultrasound along with this test and injection Tdap. Remember, you should have and start taking regular charting of your fetal movement daily, because it's you can inform us in time. We have talked about injection TT, injection flu, and injection Tdap. There's one more vaccination which is required if you are Rh negative and your husband is Rh positive, because at 28 weeks the mother and fetal circulation of the blood increased. If you are Rh negative and baby is positive, when baby's blood come inside, it will create some antibodies in the mother, and those antibodies pass in the baby and leads to the destruction of the blood cells in the baby. So at 28 weeks, we have one test which is called indirect home test or ICT, to know whether you are already have those antibodies in your body or not. So if you are ICT negative or 1:2, at that time we give you NTT vaccination, that is called anti-G gamma globulin, which causes a production of the protective layer inside your body. So when the fetal blood comes, it is destroyed and no antibody formation is there to destroy the fetal cells in fetal body. Your baby is safe. This vitamin injection entity we give at 28 weeks, and again we repeat it at 34 weeks. Now your baby has crossed 32 weeks and reaching towards the last leg of this 9-month long journey. And this is the time you have to be more vigilant, because anything can cause a premature delivery and baby may require an echo admission. But if you are vigilant, your movements are restricted, but you need lots of pelvic exercises also to have a vaginal birth and the recovery of your body after delivery. You go ahead and enter in the 36 weeks, when again we will evaluate you completely with your hemoglobin, with your urine and your sugar levels. And not only, we will do a growth scan at that time to see what is the amniotic fluid volume, what is the baby's weight, whether baby is growing normally. People say, why there is so many ultrasound? So don't do it. But if you are doing a regular monitoring of baby, it gives us lots of information how to go about it. So this is the last time of your all detailed evaluation. Then you enter in the 9 months and the countdown starts. Normally after 37 weeks, we call it term pregnancy. But before 37 weeks, it is called preterm, late preterm period of the baby. So there are some signs which we should understand. If they are appearing, we should rush to the hospital.
Number one is the daily feature monitoring. If your baby is not moving properly, if in 1 hour there is less than 3 movements, you should report to your doctor. A false alarm is better than no alarm. The second thing is if you're having a leaking, if it is a frank leaking, you will aware that water bag is ruptured. But sometimes there's a small drop like the leakage is there and it is a urine. Apply a pad, see if it is continuously coming and soaked. Go and check it, maybe you are having a highlight. Then there are certain other things you should remember. Some women develop blood pressure in the last month only, severe headache, upper abdominal pain, intractable vomiting, confusion, sudden swelling in the whole body, or there's a visual disturbance. Immediately report to your doctor. And nowadays, instruments are available. It's good if you buy a good BP instrument and have your BP regularly for 3-4 days in your home daily, it will also help you. So always remember of the danger sign. There's one sign which I always say, I'm really dreaded of that condition. I'm not dreaded of blood pressure. I'm not dreaded of sugar. That is itching in whole body where your liver enzyme is increased. And here we have to take out those babies little prematurely around 36 to 37 weeks. So your liver function test is also an important test in presence of the itching. Wow, you have crossed 37 weeks. There are certain points you should remember. Number one, your regular exercise. Planning of the birth. Discuss with the doctor what you want. Understand what is epidural analgesia. दर्द से ही तो डरते हैं कि प्रेगनेंसी में दर्द होगा तो फिर डिलीवरी हम विजाइनल कैसे करा सकते हैं. So understanding why and how this painless delivery is being done. That is one point. Ready your bag. Although in today's world you don't require many things, but take your music. If you are a God-fearing person, take your God with you, the chantings, your beads, and undergarments and baby's clothes, and all your records and your cards. Go to the hospital, discuss your finances, close your finances with their financial desk, and at this time, anytime you can have a pain. When you have a pain, watch it. The first delivery takes 16 to 18 hours. So if your pain is increasing in intensity, the duration is increasing, the frequency is increasing, it is a high time to go to the hospital and see whether it is a false labor or an actual labor. And third thing which is very important to understand at this time, you need a pelvic examination from your doctor. That is an internal examination from the natural passage. She will assess in your vagina whether your bones are ready to accommodate a baby or not. Please don't shy or afraid of this test. It is must. Usually we do it at 38 weeks, and sometimes if we see there's an infection, we take culture also. And if you are found HSP positive, this is another time when we really judge still there's any HSP infection or not, whether we should allow a delivery vaginally or not. So last 3 months is 3 weeks are the period where the neurocognitive development of the fetus occurs. So it is very important period. Be happy, don't have stress, don't pass your actress to baby. Only a positive mother can deliver a positive baby. There is always a question patient asks me, डॉक्टर साहब लेटना कैसे है? तो जब तक आपका प्रेगनेंसी 12 वीक्स 13 वीक्स तक है तो वो नीचे पेल्विक बोन के अंदर है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर यू लाई सुपाइन ऑन योर बैक ऑन योर टमी. बट एज बेबी ग्रोज कम इन द एब्डोमेन, इट प्रेसेस योर लॉन्ग वेसल्स जो कि आपके बैक की तरफ से आ रही होती हैं. थिक ऑफ अ पाइप, इफ यू पुट अ स्टोन ऑन इट तो ब्लड का जो वाटर जो बह रहा है वो रुक जाएगा. सो सेम हैपन हियर. When baby is big, it will press those blood vessels. The blood flow to the baby is hampered. Even the blood which is accumulated in the legs will not come up properly.
So that's why we always say, don't lie on your back, lie more on the left side. You can lie on the right side, but more on the left side. Now the question why? Because your uterus is deviated already on the right side. When you lie on the left side, it becomes in the mid position. Okay, so if you lie on the right side, it become more right. And what it will do, तो यूरिन का पाइप जो जाता है उसको दबाएगा, तो यूरिन का पाइप दबने से, यूरिन का बहाव ना होने से यूरिन का पाइप मोटा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में एक नॉर्मली मोटा पाइप मिलता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल यूरिन के पाइप का मोटा कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो वो दिक्कत भी कर सकता है, यूरिन रुक भी सकता है, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। और लेफ्ट साइड होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा लेफ्ट साइड हो जाए, इवन अ टिल्ट ऑफ 15 डिग्री विद द हेल्प ऑफ द पिलो इज इनफ। बाय दैट वे, अगर समटाइम आपकी आंख खुलती है, आप देखते हो आप सीधे लेटे हुए, तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा दर्द होने से कुछ नहीं होता है, बट लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज वेरी गुड। एंड यहीं पर एक छोटी